Yeah. Piffin, I'm in the building. Sister in the building. Pour out the bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. So if you see this bike, actually बहुत ज़्यादा डाउनशिफ्ट और अपशिफ्ट करना पड़ता है, तो सिटी में एक टास्क बन जाता है बेसिकली. ओनली इफ यू आर, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप डाउनशिफ्ट अपशिफ्ट ज़्यादा कर रहे हो तो तुम्हें मज़ा आनी चाहिए वो चीज़ करने में. इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ राइडर जो आराम से हौले हौले एक ही गियर पे चलाना चाहता है बुलेट की तरह, then I would suggest you to buy this. Go for the new Bullet RE. Because उसमें भी at the end of the day अच्छे modification, vibration reduction सब कुछ हुआ है. शाम को थोड़ा ट्रैफिक तो रहेगा बस, इसका आप कुछ कर ही नहीं सकते हो. तो ऐसा लग रहा है एकदम से दरवाजा खोल देगा तो क्या होगा. पूरी मूवी बन जानी है मेरे पे. आई मीन ये डर मेरे को तो नॉर्मली रहता ही है अगर बस के मैं लेफ्ट हैंड साइड पे चला रहा हूँ, बिकॉज अगर खुल गया तो जैसे कैसे और खुल गया. तो अभी जो डैश पे दिख रहा है 40.4 एंड 60.2, दिस इज द रियल टाइम एवरेज. रियल टाइम एवरेज इन KMPL, which is good to know actually. You if you have this, तो एक सेंस बना रहता है. आप थोड़ा मेंटेन्ड RPM पे चलाते हो, you just don't rev it up like an asshole. Also, this is my grip. This is how I hold my handle. This is like the best grip I can say. I mean, ये जो उंगली है वो क्लच के फ्रंट प्लेट से नीचे आती है, so it doesn't squeeze this index finger. And ये 3 पे कंट्रोल ज़्यादा रहता है, and because of that I can also move my thumb. So that's my holy hold. It's my left hand, so don't even think about anything. हॉर्न पे कमाल करते हैं. I know he can like plunk me easily. Yeah, the KTM man, KTM has the best engineered engine. Even if it is a fucking 125cc engine, they have the best engineered engine. See, when you see about the best engineered, how do I speak this? Is in any machine, the whole aim of mankind has been to make it more efficient, to reduce losses, any kind of losses, and make it more efficient. So be anything, like कोई भी take this bike for an example, ठीक है. So जो पहले बुलेट थी, sorry, let's take bullet for an example because that is more apt in this situation. So जो बुलेट थी वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती थी. Now they have reduced the vibration, and because of vibration there were issues faced in the small छोटे मोटे जो पार्ट्स हुआ करते थे उसमें. तो पार्ट्स कम करना, वेट रिड्यूस करना, वाइब्रेशन कम करना, these are all the tips and tricks of increasing efficiency in any machine. Anyways, my point being, KTM has done something with its 125cc engines and 250cc engines that none other bikes have done.
ठीक है, producing that much amount of power, reducing the weight, reducing the vibration, keeping it that economical, I mean not economical but keeping it that commercially available on road, ठीक है, इन सब चीज़ों को देख के and with a beautiful frame, I mean I don't know if you know this or not but it has a beautiful frame, ठीक है, the sachet is really amazing और ये sachet सब आपको दुकाटी या ट्राम क्रैम इन सब में दिखेगा. So that good level of engineering on a bike, entering a market with 100cc bikes जो स्प्लेंडर हुआ करती थी 90cc, 115cc, 105cc, ठीक है, उस मार्केट में KTM एंटर हो रहा है when Bajaj Pulsar was dominating like hell, ठीक है, सबके पास बजाज पल्सर थी. उस मार्केट में वो डोमिनेट करता हुआ उसको कहीं ना कहीं एक कंपटीशन देना ये बड़ी बात थी. So that particular company, I don't know the full form of KTM, पहले बार बता दूं, it has done it. Now Honda on the other hand is trying to do that. Apparently it is trying to kill the game of all the 350cc engine which used to give good mileage on Indian roads. It is trying to do that. I mean, this is the version 1 of Honda 350cc engines. I bet in upcoming 1 to 2 years there will be more of the engines which will be releasing. I mean, with a better modification of the bike, the chassis, the nits and bits which are lacking over here, वो सारी चीजें फुलफिल की जाए तो देखने में मजा आएगा.